Hi guys, welcome back. This is Khadija Ijaz from the Coach 360 and I work as a content executive. Hey guys, this is Samya. I work at Coach 360 as social media manager. आज हम बात करने वाले हैं social media in 2026, especially with AI. Is it going to be wild? Is AI going to replace humans? ये चीज़ हम बार बार सुनते आ रहे हैं. Relax guys. AI is not going to replace you. It's going to assist you. In short, 2026 बहुत ही insane year होने वाला है for social media. Insane भी I think छोटा word है. You know how algorithm is changing. Platforms are getting smarter. पहले सिर्फ likes और views track होते थे, but अब human behavior भी track हो रहे होते हैं. Human behavior. So like basically अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाने की वीडियो आएंगी. Exactly. Algorithms predict your mood. Even micro signals भी track हो रहे होते हैं. Like आपने कितनी देर feed पे scroll किया, आपके expressions change हुए या नहीं हुए. Like every minute detail. So basically आपका पूरा एल्गोरिथम AI ट्रैक कर रही होगी और आपको पता भी नहीं होगा. Yeah. Okay, let me explain. वॉइस ओवर, वीडियोज़, एडिटिंग, थंबनेल्स एक्सेट्रा ये सब AI कर सकती है. इवन जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी AI कर सकती है. बट द थिंग इज़ अब क्रिएटर्स क्या करेंगे? कंटेंट क्रिएटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डायरेक्शन. Like that makes human generated content different from AI वाला content. AI execution तो कर सकती है, but ये जो cool concepts होते हैं और different ideas होते हैं with human touch in it, वो सब AI नहीं कर सकता. So basically AI is like your assistant, not your boss. You just need to be creative. That's it. That's the difference. Algorithm has been changed, and now you need quality and consistency both for social media growth. But consistency का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप spam posting करना शुरू कर दो. बिल्कुल भी नहीं. Like no. Okay guys, very quick but very important. Take screenshots or take notes. तो 2026 के लिए growth points क्या हो सकते हैं? Number 1 would be take ideas from ChatGPT. Do some niche positioning. Yeah, and micro communities are very important. Face forward content. So basically face forward content निकालना ज़रूरी है. And number 5, add daily touch points. So face वाला content निकालना is really mandatory. Yes, क्योंकि AI is going to create a lot of faceless videos. और human face से trust और relatability create होगी. Okay, now trends time. I love this part. Yeah, so the first trend of 2026 can be hyper short content. 3 to 10 seconds max. जितना to the point और छोटा content होगा उतना वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. और आपको अपने attention span के बारे में तो पता ही होगा. Trend number 2 would be smart collaboration with humans and AI, like AI clones, virtual assistant, deepfake collabs, etc. I'm definitely making an AI version of myself ताकि वो मेरा सारा काम कर दे. Trend number 3, mood-based feed. Apps will predict your emotional behavior. So basically, if I'm sad, I'll get happy videos. Exactly. Personalized mood-based feeds. So last but not the least, trend number 4, search-based content. So basically, Instagram and TikTok are behaving like search engines. So ranking will matter a lot. Yes. तो algorithm अब क्या देखेगी? सिर्फ views? No, algorithm अब 3 चीज़ें जज करेगी, like retention curve, shares and repeat views. Shares सबसे ज़्यादा matter करेंगे. Yeah, that's going to tell if your content is good enough or not. अगर content अच्छा होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग share करेंगे. Okay guys, so final tip. Learn AI. Use AI. But stay human. Tell your story. Post frequently. Post consistently. And don't overthink it. 2026 में जो trends में आगे रहेगा वही जीतेगा. Exactly. Overthinking करोगे तो हार जाओगे. Executors are going to win in 2026. AI से collaborate कर लो. Do not consider it as a competition. See you in the future. Bye.